Hello students, now we are solving sum related to slopes of a line. Determine x so that 2 is the slope of line through 2, 5 and x3. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, that means x1 y1 and x2 y2, and we want to find the value of x, and given lines have the slope 2. Now we know slope of line we represent the slope of line by small m. Slope of line m equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. That is the formula of slopes of a line. Now in the given sum, slope 2 already given. So by the question 2 slopes of line equal to, now that is x1 y1 x2 y2. So y2 minus y1, 3 minus 5 over x2, that means x minus x1, that is 2. So 2 equal to minus 2 over x minus 2. Cross multiplications, 2 x minus 2 equal to negative 2. Divide both sides by 2. 2 to cancel, so that means x minus 2 negative 1. Now transpose 2 on the right hand side, negative 2 on the right hand side, and it becomes positive minus 1 plus 2, and x equal to minus 1 plus 2, that is 1, our answer. तो x की वैल्यू साढ़े कोले 1 आ गई। सानू एक लाइन दी सी, उहदे 2 पॉइंट्स दिते हुए सीगे। Now we know slopes of line m equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. By the questions, 2 already given. Slopes of this line 2 equal to 3 minus 5 means y2 minus y1 over x2 minus x1 x minus 2. Now we have solved it, and the value of x equal to 1. Now students, state whether the two lines in the following problems are parallel, perpendicular through 5, 6 and 2, 3, through 9, minus 2 and 6, minus 5. ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਵਨਸ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਸ ਆਊਟ, ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ 5, 6, 2, 3, दूसरी लाइन 9, minus 2 and 6, minus 5. Now we want to check whether the given lines are parallel or perpendicular. Now we know if the slopes of these two lines are equal, then the given lines are parallel. And second, if the multiplication of slopes of these two lines equal to minus 1, that means lines are perpendicular. अगर दोनों लाइन्स दी स्लोप्स का रिजल्ट इक्वल आउंदा तो लाइन्स की होणगियां पैरेलल। अगर दोनों लाइन्स की मल्टीप्लीकेशन की स्लोप्स की
इक्वल टू -1 आ तो ये की होणगियां परपेंडिकुलर। वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड, मैं तुहानूं पहले दस चुकिया वा, आपां पहले आर्टिकल वीडियो दे विच तुसीं मेरी देख सकते हो, उहदे विच असीं प्रूफ कीता सी आर्टिकल फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर दे लई M1 M2 मीनस मल्टीप्लीकेशनस ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइन्स, M1 पहली दी M2 दूसरी दी इक्वल टू -1 होवे तो वो लाइन्स की होंदियां ने परपेंडिकुलर होंदियां ने। नाउ लेट A 5 6 and B 2 3, similarly C 9 -2 and D 6 -5। इस पॉइंट्स नूं असीं किया A B C and D का नेम देता। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कि थ्रू A एंड B, पहले दो पॉइंट है जेडे A ते B। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू A एंड B, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू A एंड B। नाउ M1 वी नो स्लोप ऑफ लाइन की फार्मूला होंदा है, स्लोप ऑफ लाइन दा स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू y2 minus y1 over x2 minus x1। now in this case slope of line through AB, that is x1 y1 x2 y2। now y2 that is 3 minus y1 that is 6 over x2, x2 is 2 minus x1 is 5 and M1 equal to -3 -3 cancel, that is a 1। so M1 equal to 1। पहली लाइन की जिहड़ी स्लोप आ थ्रू A एंड B पॉइंट दे विच वो साडे कोल कितनी आ रही है, दैट इज M1 इक्वल टू 1। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू C and D, through C and D, that is x1 y1 x2 y2। so M2 पहली लाइन नूं मैं M1 का नाम दिता उसकी स्लोप नूं, सैकेंड लाइन की स्लोप नूं M2। so y2 -5 minus y1 -2 over x2 6 and x1 9, and it becomes -5 minus minus plus 2 over 6 minus 9, that is -3, and it becomes -3 over -3 cancel, so M2 equal to 1। now M1 and M2 have same result, that is 1। so therefore M1 equal to M2, given lines are parallel, P-A-R-A-L-L-E-L, parallel, because their slopes results are same। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ
एंड वी गॉट अ रिजल्ट m1 एंड m2 दोनों की स्लोप इक्वल आ गई. दैट मीन्स गिवन लाइन्स आर पैरेलल. नाउ स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट सम. State whether the two lines in the following problems are parallel perpendicular through 2 minus 5 and minus 2 5 through 6 3 and 1 1. साढ़े कोले ये 2 पॉइंट्स दिते हुए ने फर्स्ट लाइन दे, ये 2 पॉइंट्स ने सेकंड लाइन दे. नाउ वी विल बी फाइंड अगेन the slopes of these two lines. Agar slope, if the slopes are equal, then given lines are parallel. If the multiplication of their slopes equal to -1, that is given lines are perpendicular. Now let the given points B A असी पहले नू A दा नाम देता 2 minus 5 B minus 2 5 ये फर्स्ट लाइन पॉइंट होगी एंड C 6 3 and D 1 1. Now we will be find the slope through AB and CD. Now slope of line through A and B. A and B. Now slope of line, we know slope of line means m equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Now slope of line through A and B, that is m1. मैंने m1 का नाम देता इक्वल टू. नाउ दैट इज x1 y1 x2 y2 y2 minus y1, that means 5 minus 5 over x2 minus 2 x1 2, and it becomes 5 plus 5 minus minus plus over 4, and it becomes 10 over minus 4, means m1 equal to 2 5, that means minus 5 over 2. जो m1 slope of line first through these points A and B, we have m1 equal to negative 5 over 2. Now, similarly slope of line through C and D, C and D, again x1 y1 x2 y2. So m2 slope of a second line, y2 minus y1, that is 1 minus 3, x2 1 minus x1 6, and it becomes minus 2 over minus 5, minus minus cancel. So m2 equal to 2 over 5.
Now multiply m1 and m2, what we will be get? Let us see. m1 multiply by m2, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ slopes ਨੂੰ multiplication ਕਰਾਂਗੇ. Put the value of m1, that is negative 5/2, multiply m2 2/5. So 5 cancel with 5, 2 cancel with 2, -1. That means m1 m2 equal to -1. Therefore now m1 m2 the multiplication is -1. That means therefore given lines are perpendicular. अगर दोनों लाइन की स्लोप्स आ उन्हों की मल्टीप्लिकेशन -1 होवे, then we know that given lines are perpendicular.